Hello and welcome back, dear my children. We are back again with the Acknowledge series by Amit Publishing House. We are doing children book 6 and this is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to do chapter number 4 of your geography and the name of the chapter is Map Reading. So let's start with the chapter. In this chapter, we are going to learn about maps. And before doing that, let's do this exercise given here. Here, we have to write the direction names onto the compass rows given below. So here, a compass is given and we have to write down the name of the directions. You can take help from the help box. So here, children, a help box is given. From this, you have to choose the directions and write it here. So north, south, east, west. This is north, east, west and south. South, west. So between south and west, this is southwest. Southeast, south and east. Between south and east, it is southeast. Northwest, between north and west, it is northwest. And northeast, between north and east, it is northeast. So we have done this exercise. Now let's start with the chapter. As you already know that with the help of latitudes and longitudes, we can locate a place precisely on a globe. Globe help us in studying different directions and understanding how the earth rotates on its axis. But they are difficult to handle and store due to their size and weight. So as children, we know, हमें पता है कि latitudes और longitudes को जब आपस में ये दोनों meet करते हैं, तो because of this we can locate the places को हम locate कर सकते हैं globe पे कि अगर a particular latitude किसी particular longitude से मिल रहा है तो वहाँ पे कौन सी place है. ग्लोब जो है हमें डिफरेंट डायरेक्शंस को भी पढ़ने में हेल्प करते हैं और ये भी बताते हैं कि अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. बट एज यू नो कि ग्लोब इज अ लिटिल बिग इन साइज, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट. इसे हैंडल करना, इसे स्टोर करना, कहीं ले जाना ले आना इज वेरी डिफिकल्ट. दे आर ऑफ स्मॉल स्केल्स एंड ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी ऑब्जर्व एट वन टाइम. सो ये स्मॉल स्केल पे है और इसमें अर्थ का सिर्फ एक ही हाफ हम देख सकते हैं एक समय में. कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स, मैप सर्व एज कन्वीनियंट मीन्स ऑफ स्टडीइंग द वर्ल्ड. सो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैप्स बनाए गए जो इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट थे, ग्लोब से ज्यादा कन्वीनियंट थे वर्ल्ड को रीड करने. मैप्स आर इजी टू कैरी एंड स्टोर. मैप को हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. They help us to understand the relationship between different aspects of a region. और किसी भी different region के aspects को भी ये easily understand करने में हमारी help करती है. These days, aerial and satellite photography is used to make accurate maps. So आजकल जो है satellite photography use की जा रही है, aerial photography use की जा रही है ताकि maps को और ज़्यादा accurate बनाया जा सके. What is a map? A map is a representation on a or a drawing of the earth's surface and parts of it is drawn on a flat surface according to the scale. So scale के according map जो है earth के structure को represent करता है. एक drawing है वो जो एक flat surface पे बनाई जाती है. What are the advantages of map? Map gives information about places and help us to find our way. Map information देता है और ये बताता है कि कौन सी जगह कहाँ पे हम इजीली कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं. दे शो द फीचर ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया का फीचर बताता है. मैप कैन ऑल्सो टेल अस हाउ स्टीप और फ्लैट द लैंड इज. मैप ये भी बताता है कि कोई भी एरिया, कोई भी जगह कितना ज्यादा स्टीप है, ऊंचा है, नीचा है, फ्लैट है. मैप रिड्यूस द वर्ल्ड टू पॉइंट्स, लाइंस एंड एरिया by using different types of representations such as size, shape, values, structure, texture or patterns, colors, orientation and shape. So ये different things जो यहाँ पे mention की गई, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है मैप.
These help us in interpreting the map and we get to understand what the area of a place is like. So इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमें इजीली पता चल जाता है किस एरिया की बात हो रही है, वो एरिया कैसा है. A compilation of map into a book is called the atlas. So बहुत सारे मैप्स को एक साथ कंपाइल करके एक बुक बनाई जाती है जिस बुक का नाम एटलस है. It contains important information about the places shown in it. So ये जो भी मैप्स हैं इसमें वो सारी important information होती है जो एक प्लेस के लिए जरूरी होती है. The earlier maps date back to Babylonia in 2300 BC. These were sketches of animal skin or carved on wood, leather and clay tables. So पहले जो मैप्स थे वो जो है थे नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन वहाँ पे लोग क्या करते थे, स्केच बनाते थे एनिमल स्किन पे, वुड को कार्व कर देते थे, उस पर जो है नक्काशी किया करते थे और लेदर पे, क्ले टेबल्स पे, इन सब पे वो डिफरेंट डिजाइन्स बनाते थे जिससे वो मैप डिपिक्ट करते थे. Eratosthenes, a Greek, was the first to draw the world map, assuming that the earth is spherical. So this person who is a Greek man, इसने जो है फर्स्ट टाइम मैप को डिपिक्ट किया था, अज्यूम किया था और उसे ड्रॉ किया था और उन्होंने ही बताया था कि मैप जो है द वर्ल्ड इज, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. टाइप्स ऑफ मैप्स. कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैप्स है? मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड. So now we are going to learn about the different types of maps. The first one is here, the physical map. पहले हम पढ़ेंगे physical map के बारे में. Map showing relief features on the Earth's surface, such as ocean, sea, lakes, rivers, are called physical map. जो physical feature बताते हैं अर्थ के वो physical map है, जैसे कि ocean कहाँ पे है, sea कहाँ है, lakes कहाँ है, अर्थ का surface के बारे में बताते हैं. These are physical maps. They also show landforms such as mountain, plains, plateaus and islands. So ये mountain, plain, plateaus के बारे में भी information देते हैं. Now the next type of map that we are going to learn is political map. Map depicting borders of countries. वो मैप जो सिर्फ कंट्रीज के बॉर्डर के बारे में बताते हैं, स्टेट्स के बॉर्डर बताते हैं या इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में बताते हैं. These are called political maps. Now let's learn about a third type of map, that is thematic maps. Maps which give us the geographic overview of specific themes like distribution of rainfall, agriculture products, minerals are called thematic map. So वो मैप जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे कितने रेनफॉल हुई, कहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा है, कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, क्या क्या क्रॉप्स मिलते हैं, ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं. These maps also give us the detail of roadways, railways and airways. और ये जो मैप है हमें रोडवेज के बारे में बताते हैं, रेलवेज और एयरवेज के बारे में भी बताते हैं. So these type of maps are called thematic maps. So children, हमने 3 तरीके के मैप्स के बारे में यहाँ पढ़ा, physical, political and map. Now अब हमने मैप्स के बारे में पढ़ तो लिया. Now let's learn about the importance of map. मैप क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? Maps are useful tools that provide accurate information about location of streets, cities and countries. Maps जो हैं street, cities और countries के बारे में बताते हैं. They indicate the physical feature of the land. ये land के physical feature को भी बताते हैं. Climatic condition, weather pattern, vegetation and wildlife of a region. So ये जो information यहाँ लिखी है इन सब के बारे में डिटेल में maps हमें बताते हैं. Unlike globes, maps are easy to carry. Map जो है globe की तरह जो है difficult नहीं है. It's very easy to carry. They can be folded, rolled, punched into a file or compiled together and bound in a book. So map को हम इन सारे ways से हम use कर सकते हैं. हम इन्हें fold कर सकते हैं, roll कर सकते हैं, punch कर सकते हैं किसी फाइल में या फिर किसी बुक में compile करके उसका एक atlas बना सकते हैं. With the help of maps, we can make comparison between places and their features. मैप की मदद से हम किसी भी 2 जगहों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके फीचर्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है. Our defense forces depend on maps to get information required to make plans to protect the country and operate the movement of the soldiers and supplies. So हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी मैप पे डिपेंडेंट है. उसे भी अगर प्लान्स बनाने हैं, कैसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है या कैसे अपने जो सोल्जर्स हैं उनके मूवमेंट को ऑपरेट करना है या कैसे सप्लाईज पहुंचानी, ये सारी चीजें अगर उनके पास मैप रहेगा तो ही वो
easily कर पाएंगे. Now these were the advantages of maps. Let's learn about the components of map. Map में क्या क्या चीजें होती हैं. Before we learn how to read a map, we must get familiar with the language of the map. So map को कैसे रीड करते हैं इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मैप में क्या क्या चीजें होती हैं. All maps are composed of some special components. जितने भी मैप हैं सब में कुछ ना कुछ special components होते हैं. Now let's discuss about these in brief. The first is the title. The title of a map generally explains its main purpose. जो मैप का जो टाइटल होता है वो उसके मेन पर्पस के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पॉलिटिकल, वर्ल्ड, फिजिकल, दिल्ली सिटी मैप्स. सो इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हो, टाइटल उसमें लिखा रहता है, इंडिया पॉलिटिकल लिखा रहता है, या वर्ल्ड फिजिकल लिखा रहता है, या दिल्ली सिटी मैप्स एक्सेट्रा. इस टाइप के और भी बहुत सारे मैप्स यू कैन सी. नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट द डायरेक्शंस. To read a map effectively and accurately, we must know more about directions so that we can gather information about nearby places, objects and things. So अगर हम चाहते हैं कि मैप को हम इजीली पढ़ पाए तो हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए. The 4 cardinal directions are north, east, west, south. So 4 cardinal directions हैं और ये चारों है east, west, north and south. And are represented at arrowhead on the map. मैप में arrowhead के रूप में ये लिखे हुए होते हैं. The directions are in the between the cardinal directions are also called intermediate directions. So in cardinal directions के बीच में जो direction होते हैं उन्हें intermediate directions कहा जाता है. They are northeast, northwest, southeast, southwest. A compass is a navigational instrument that informs us about directions with reference to the stationary object on the surface of the earth. It uses magnetism to show direction. So जो है ये compass है जो हमें directions के बारे में बताता है और ये किस principle पे चलता है? Magnetism के principle पे चलता है. It uses this principle and because of this it shows us the directions. Next is the scale. A map is always much smaller than the area it represents, but it is always drawn on to a scale. So map जो है किसी भी एरिया से छोटा होता है. अगर कोई एरिया है उससे छोटा ही मैप होगा, उस एरिया को छोटा ही शो करेगा. So ऐसे में स्केल की जरूरत होती है जिसपे वो मैप ड्रॉ किया जाता है. Scale is the ratio of distance between 2 places on a map and the actual distance on the ground. So scale क्या है? ये रेशियो बताता है दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में रेशियो बताता है और जितना कि उनका एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे. द स्केल enables the readers to translate distance shown on the map into the distance onto the ground. ये जो स्केल है ये रीडर्स को हेल्प करता है ट्रांसलेट करने के लिए डिस्टेंस को जो मैप पे शो की जा रही है. To prepare a map, every part of it is drawn to the same scale so that all objects in the map are of the same proportion as they are on the earth. So map को prepare करने के लिए जो भी उसके parts draw किए जाते हैं वो same scale use किया जाता है for every map ताकि जो भी map है वो proper और same proportion दिखा सके earth को. If a city is twice as large as a neighboring town, अगर एक city जो है इतनी large है जितनी की neighboring town है and accurately scale map will show the same relationship. तो ऐसा जो मैप है वो same relationship शो करेगा. Based on scale, there are 2 types of maps: small scale maps and large scale maps. So scale पे अगर हम डिपेंड करेंगे तो 2 तरीके के मैप्स हैं जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, small scale and large scale. Large scale maps give us more information than the small scale maps. So जो large scale map है, obviously they will give us the more information about. And the scale can be represented in the 3 ways. Scale को 3 ways में represent किया जाता है. The first is a representative fraction, that is RF. The representative fraction is a scale that shows how many units on the Earth's surface are equal to 1 unit on the map. So ये जो representation factor है ये बताता है कि Earth पे कितने units हैं जिसे हम scale पे किस amount में show करें. It shows that how many units on the earth surface, कितने units earth surface में हैं
इक्वल है टू 1 यूनिट ऑफ द मैप. मैप का 1 यूनिट कितने अर्थ यूनिट के बराबर है. This shows this RF, and it is a ratio of distance on the map to distance to the ground. So ये ratio बताता है, distance बताता है map में related to the ground. This can be shown as 1:60,000 or 1/60,000. In this example, 1 unit of distance on map represent the 60,000 of the same unit of distance on the ground. So यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर 1 यूनिट जो है मैप पे शो हो रहा है तो अर्थ पे 60,000 यूनिट्स शो होगा, and both will be equal. This means that 1 inch on the map represents 50,000 inches. इसका ये मतलब है कि अगर मैप में 1 इंच है तो एक्चुअली में 50,000 इंच की बात हो रही है. एंड 1 फीट ऑन द मैप रिप्रेजेंट 60,000 फीट ऑन द ग्राउंड. अगर 8 फीट है मैप में तो 60,000 फीट है ग्राउंड में. सो by this we can calculate the distance. The next is the verbal scale. The verbal scale states how much distance on the ground is represented by a particular distance on the map. So ये जो verbal scale है ये बताता है कि कितना distance जो है ground में है जो represent कर रहा है about the particular distance map का. For example, if 5 centimeter on a map represent 1 kilometer on the ground, then 10 centimeter on the map will represent 2 kilometer on the ground. So इसका मतलब है कि अगर 5 सेंटीमीटर मैप में दिखाया जा रहा है तो 1 किलोमीटर ग्राउंड में होगा, और 10 सेंटीमीटर का मैप में दिखाया तो 2 किलोमीटर ग्राउंड एरिया होगा. The next type of measurement is the linear scale. The linear scale is represented on the line which is divided proportionally into sections. This scale shows the relationship between the distance on the ground and the distance on the map. It is most commonly used for showing comparative smaller areas on the map, chart and engineering and architectural drawing. So ये जो linear scale है ये small areas को दिखाता है जो map में present होते हैं. The next is conventional symbol. Map provides us with a lot of information in a small space. So एक छोटी सी जगह में मैप हमें बहुत सारी information देते हैं. Therefore, symbols are used to save space and make map reading easier and simpler. इसलिए symbols को use किया जाता है ताकि map reading को easy किया जा सके, simple किया जा सके. The various symbols and colors used on the maps have interestingly accepted standards. So जो भी colors आपको दिख रहे हैं इनके कुछ अपने अपने international accepted standards हैं. Different symbol represent different object on the map. जो अलग अलग symbols है वो अलग अलग objects को represent करते हैं map में. These symbols may be simple drawings, letters, shortened words or colored shapes or area. So map को elaborative बनाने के लिए जो है बहुत सारे symbols का use होता है. जैसे कि कुछ drawing use की जाती है, कुछ letter को use कर दिया गया, कुछ words को short करके लिख दिया गया, कुछ colored shapes डाल दिए गए ताकि area को easily पहचाना जा सके. So here children you can see a large scale map is here. And you can see so many details are given here. This particular state is divided into so many cities. All the cities can be seen here. Physical maps use specific colors to show the elevation of the place on change or the change in elevation over an area. जो physical maps हैं वो specific colors को use करते हैं and places को शो करने के लिए. डार्क ग्रीन यूजुअली रिप्रेजेंट लो लाइन लैंड. जो डार्क ग्रीन कलर है उससे जो है लो लाइन लैंड का पता चलता है. लाइट और डार्क ब्राउन रिप्रेजेंट हायर एलिवेशन. डार्क या फिर लाइट ब्राउन की जब बात होती है तो वो हायर एलिवेशन मींस हिल्स की बात करता है. ब्लू इज जनरली यूज्ड टू इंडिकेट वाटर. द डार्कर शेड ऑफ ब्लू रिप्रेजेंट द डीपर वाटर. जहाँ पे डार्क ब्लू है वहाँ पे वाटर जो है डीप है. And lighter shade of blue signifies shallow water bodies. Light shade जो है वो हल्के water bodies को बताता है. Now let's learn about legend or key. Legend or key क्या होता है? A legend or key is used for symbols that are used in a map. So ये symbols के रूप में use किए जाते हैं map में. The key usually shows a small picture of each of the symbol used on the map.
ये जो की है हमें शो करता है, स्मॉल पिक्चर्स को बताता है और ईच ऑफ द सिंबल यूज्ड ऑन द मैप। सो कौन कौन से सिंबल क्या क्या चीज को डिपिक्ट करते हैं, दिस इज शोन बाय दिस लेजेंड ऑफ की along with the written description or the meaning of the symbols. So suppose हमने कोई सिंबल बनाया है, अब इस सिंबल को हमने क्यों बनाया मैप में, तो हम जो है साइड में जो है सिंबल को बना के और लिख देते हैं कि दिस शोज द हिल्स। सो जहां भी ये सिंबल होगा मैप में इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हिल्स। So this is the legend that gives the brief information of that symbol. Now the next one is a sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and the spot observation and not to scale. Sketch क्या है, एक drawing है जो सिर्फ memory observations पे based है और ना कि ये scale पे based है. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where the particular place is located with respect to other places. So कई बार होता है हम एक रफ जो है drawing बना देते हैं किसी एरिया की जो ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है. Suppose you want to go to your friend's house, but you do not know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. तो अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपको जगह नहीं पता, तो आपको फ्रेंड क्या करेगा, एक रफ स्केच बनाएगा अपने एरिया की और आपको बताएगा कि आप इस रास्ते से आओगे, यहाँ पहुंचोगे, फिर इधर जाओगे, तब आपको मेरा घर मिल जाएगा. Such a rough drawing is drawn without scale. और ऐसी ड्राइंग विदाउट स्केल बनाई जाती है और इसी को ही हम स्केच मैप कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्लान. The size, shape and extent of the building is drawn to scale on the first paper. So जो size है, shape है, ये किसी building की ये पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. And these detailed drawings of various structures and buildings are called plans. और इन्हीं detailed drawings को हम buildings को क्या कहते हैं, plan कहते हैं. They are made by architects who design the house. ये architects बनाते हैं जो house को design करते हैं और buildings को design करते हैं. These plans show the position and size of room. ये जो plans है ये room की size और position बताते हैं. Balconies कहाँ होगी, staircase कहाँ होगा, door कहाँ होगा, window कहाँ होगा, ये सारी चीजें plan में पहले से बनाई हुई होती है, उसके according houses construct होते हैं according to a scale. Now children, let's quickly revise what we have learned here. A map of a region is a dramatic representation of an area. There are two types of maps, like the physical, there are many types of maps, like physical, political and thematic maps. The main element of a map are title, direction, scale, conventional symbols and colors and key. Sketches are rough drawings used as guidelines for giving the direction to a place. And plans are detailed drawings of various structures and buildings according to a scale. Now let's answer these questions. The first question is, how are maps useful to us? So for knowing about the particular place, we need map so that we can easily find out that place. That's why maps are useful to us. And what is the scale of a map? Scale is used to tell the proper location of that place and how much area that place is occupying, and this can only be measured with the scale of a map. What are the three ways in which it is represented? So children, this you have to write on your own. Now give the importance of conventional symbols on map. So what are conventional symbols? Write it here. How are directions of map determined? मैप के डायरेक्शंस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? It is already written there and the directions are mentioned: north, east, west and south. And also there are sub directions are there, which is northeast, northwest, southeast and southwest. And with this, the different directions are determined on the map. Do you think drawing maps and plan require great skill? A lot of time and calculation give reasons. Yes, for drawing a map, we need all these things that are written here, and because it needs a proper scale to measure each and every detail. Otherwise, we would not be able to get the proper square area of that place. So think of some more reasons, children, and write it here. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it.
and you have to complete the exercises that is given to you as homework, and for that you have to read the chapter again. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay little.